नमस्कार, मैं हूं आयुषी गौड़। आज बात करेंगे उस ऑपरेशन की जिसने न सिर्फ आतंक के सरगनाओं की नींद उड़ा दी बल्कि पाकिस्तान की हकीकत को भी एक बार फिर बेनकाब कर दिया। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। इस ऑपरेशन की सफलता के बाद पाकिस्तान इस कदर बौखला गया कि उसने बुधवार की रात भारत के 15 शहरों पर मिसाइल हमले कर दिए। लेकिन भारत तैयार था, मुंहतोड़ जवाब के साथ। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इन हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। आज सुबह विदेश मंत्रालय की ओर से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें 3 अहम चेहरे सामने आए। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री। कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि हमारी प्रतिक्रिया पाकिस्तान जैसी ही तीव्र रही, लेकिन हमने उनके सैन्य ठिकानों को नहीं बल्कि एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत ने पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर सीमा पार से हमला होगा तो जवाब जरूर मिलेगा, और जवाब मिला भी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने एक और खौफनाक सच उजागर किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर कुपवाड़ा, बारामुल्ला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टर में भारी गोलाबारी की है, जिसमें 3 महिलाओं और 5 बच्चों सहित 16 निर्दोष लोगों की मौत हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। यह सीधा हमला सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि इंसानियत पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान के दोहरे चरित्र पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भारत ने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया है, और यही नहीं, पाकिस्तान ने यूएनएससी में उस आतंकी संगठन टीआरएफ का समर्थन किया था जिसने हाल ही में पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। मिस्री ने पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या हमें याद दिलाने की जरूरत है कि ओसामा बिन लादेन कहां मिला था और किसने उसे शहीद कहा था। पाकिस्तान प्रतिबंधित आतंकियों का अड्डा बना हुआ है और वहां के पूर्व मंत्री खुद आतंक संगठनों से संबंध स्वीकार चुके। देखिए, जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना दी जाएगी, लेकिन जो आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आखिरकार ये एक देश है जिसने अपना इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पे दावा बोला तो उन्होंने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, ये लोग जो गए हैं वो तो कबायली हैं। वो तो जब हमारी फौज वहाँ पे पहुंची और यूएन के लोग, संयुक्त राष्ट्र के लोग खुद वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहाँ तो पाकिस्तानी फौज घुसपैठ करके आ गई है, उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की देखनी पड़ी और उनको मानना पड़ा कि हाँ, उनकी फौज वहाँ पे कुछ समय से पड़ी हुई है। तो ये जो यात्रा है एक तरह से 75 साल पहले शुरू हो चुकी है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट दिस काइंड ऑफ disinformation is being indulged in. Finally, I want to address the some issues that have been raised related to the Indus Waters Treaty and the
the disinformation that is being raised in regard to that as well. The fact is that there have been fundamental changes in the circumstances in which the Indus Waters Treaty was concluded, and they call for a reassessment of the obligations under the treaty. Over the last year and a half to 2 years, India has been in communication with the government of Pakistan. We've sent several notices to them requesting for negotiations to discuss modification of the treaty. India has for 6+ decades now honored the treaty, even during periods when Pakistan imposed multiple wars on us, and even when relations were adversarial. Pakistan is the one that has been acting in violation of the treaty, deliberately creating legal roadblocks in India exercising its legitimate rights on the western rivers. Any projects that India sought to build on the eastern rivers, and even on the western rivers, which we are allowed to by the treaty, were always challenged by Pakistan, thereby hampering our rights to utilize our legitimate waters under the treaty. In fact, if you see, the preamble of the treaty itself states that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Mark those words, concluded in a spirit of goodwill and friendship. ये भारत का धैर्य और भारत की सहनशीलता है जो 65 साल से हम इतनी प्रोवोकेशन के बावजूद इस ट्रीटी को निभा रहे हैं. However, as has been made clear earlier as well, Pakistan has not responded to our requests to enter into negotiations for a reassessment of the obligations under the treaty. A number of conditions have changed. This is a treaty that was based on the engineering techniques of the 50s and the 60s. We are living through the first quarter of the 21st century. Technological changes and technological advancements have to be taken into account. There are demographic changes. There are climate changes that have taken place. There is the imperative of clean energy. And of course, the terrorism that Pakistan has wreaked in the state of Jammu and Kashmir itself has hampered India's ability to exercise its rights under the treaty. Pakistan's persistent refusal to respond to our requests to enter into government-to-government negotiations on the modification of the treaty is, in a sense, itself a violation of the treaty. And therefore, India has taken the step of putting the treaty in abeyance until Pakistan abjures irrevocably its support for cross-border terrorism. One point that I wanted to also address was the allegations to the targeting of a dam, the Neelam Jhelum project in Pakistan-occupied Kashmir. I want to say that this is an absolute and complete fabrication and a blatant lie. India has targeted only and only terrorist infrastructure, and the details of that terrorist infrastructure, together with the locations, were shared with you yesterday by Colonel Qureshi and Wing Commander Singh. I should note that if this kind of a claim is a pretext for targeting Indian infrastructure of a similar nature, Pakistan will be entirely responsible for the consequences that will undoubtedly follow. Not only this, Pakistan is also making attempts as part of its disinformation campaign to paint our action with regard to cross-border terrorism
through the communal angle. If that is the issue, then I think I can do no better than to cite or point you in the direction of the Pakistan Army Chief's speech of 16 April 2025. I think that is the last word in communal rhetoric. And in the Pahalgam attack itself, you are aware of the kind of religious profiling that was done there. And perhaps there is a linkage between these two events. I can only say that these nefarious designs will not be allowed to succeed in India. And it is to be noted that people from all faiths, all religions, all regions in India have unequivocally, not just in India but around the world, have condemned these attacks. Pakistan is also making attempts to, in fact, just to add to this point, the retaliatory action that Pakistan has taken, in fact, is impacting civilians. I showed you the picture of the Gurdwara and the Sikh community members who were killed in this. There are other civilians also who've been killed and injured in these attacks. In fact, since yesterday morning, a total of 16 civilians have been killed and 59 others have been injured in the attacks by Pakistan. A third point that I wanted to address was the claim that only civilians were killed in the strikes on the 7th of May. We have made the point very clearly that all attacks on the morning of 7th May were against carefully selected terrorist infrastructure, terrorist targets. It is not clear to us, in fact, seeing some of the coverage of the after effects of these strikes, including the funerals for the terrorists that are held yesterday. I think a lot of you have seen the reports and the coverage on media. If only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan. Doesn't seem to make much sense to us. Pakistan has also claimed that India deliberately attacked religious sites. This is completely false again. I have made it clear that the targets were terrorist infrastructure, terrorist facilities, and locations connected clearly with incidents of cross-border terrorism into India. And it is in fact Pakistan that is misusing religious sites as a cover to in fact radicalize, direct and indoctrinate and train terrorists. In fact, contrary to what Pakistan is claiming, yesterday Pakistan launched a targeted attack on the Sikh community in the state of Jammu and Kashmir, hitting Gurdwara in Poonch and the homes of Sikh community members, which came under attack. And we know that at least 3 individuals were killed in that particular attack.
भारत ने दो टूक शब्दों में कहा कि हम तनाव नहीं चाहते, लेकिन जवाब जरूर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आज की कार्यवाही तक भारत की नीति साफ है, आतंक का जवाब सर्जिकल और निर्णायक है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।